स्वेट शॉप में किसी ने स्टिच किया है, पर कॉटन आया कहाँ से, उगाया किसने, किसने किया, जिनिंग कहाँ हुई, जिनिंग होता क्या है, हमको शायद ये शब्द नहीं पता है कि कॉटन जिनिंग होता क्या है। और ये खास बात मुझे ऐसी लगी थी कि गुजरात में रह के हमें ज्यादा पता होना चाहिए कि गुजरात के अंदर ये सारी इंडस्ट्रीज हैं, और नॉट जस्ट है, गुजरात पूरी वर्ल्ड में इसमें लीडर है। अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो कॉटन का इंडिया इज प्रोबेबली द बिगेस्ट और द सेकंड बिगेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर चाइना। शुगर का अगर आप देखते हैं तो शुगर में इंडिया इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर ऑफ शुगर। एंड ऑफ कोर्स ब्रिक्स, तो for a country growing at 7 to 8%, bricks are ubiquitous. You need bricks for every sort of construction. लेकिन बिकॉज हम शहर में रहते हैं, हमें दिखती नहीं है इंडस्ट्री, हमें पता नहीं होता कॉटन कहाँ से आता है, हमें ये नहीं पता होता है कि ईंट बनती कहाँ से है, हमें ये नहीं पता होता है कि अगर हम शुगर, और गुजरात में खास हर चीज़ में खांड या शुगर पड़ती है। अब चाय में शक्कर डालते हैं, कॉफी में डालते हैं, दाल में डालते हैं, सब्जियों में डालते हैं, बट शुगर का ओरिजिन का क्या है, कहाँ से आ रही है शुगर, इसका कोई आइडिया नहीं होता। तो ये जो अनसीन चीजें थी उसे हमें हाईलाइट करने की बहुत इच्छा थी, इसलिए हमने टॉक सीरीज का थीम ये रखा है। अभी मैं स्टॉप करूंगी, इसके टॉक सीरीज के बाद मैं थोड़ा सा आपको अहमदाबाद स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी के बारे में बताऊंगी, बट चूंकि हम कुछ मिनट आई थिंक आगे बढ़ चुके हैं, सो एट दिस स्टेज आई विल रिक्वेस्ट इमैनुअल टू कम एंड टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट व्हाई दिस टॉक सीरीज, व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। थैंक यू। So, hopefully I got in my feeder. I'm not going to speak French, but I'm just going to welcome you in French. Bonsoir. So my voice is not loud enough. I think, is it? Okay. Bonsoir, mesdames et messieurs. Welcome to Alliance Française. It's really a pleasure for us to host this second edition of Ahmedabad Parlons. That's in partnership with the Ahmedabad project and CLRA. Actually, I met Renu and Pranav a few weeks after I arrived in Ahmedabad. It was four months ago or something, and I must say that I've hardly ever met people with such passion and commitment. So I'd like to praise them for that. Of course, they came here to talk business, so we started having this discussion about the content of this second edition, and they had so many ideas that I believe we already have the material for the years to come. Take it as a promise that there will be a third edition. It was actually really amazing for me, especially being a newcomer here, to interact people with such involvement for social change. And unfortunately, they had so many ideas because there are so many topics to cover and so many things to do. So eventually, we set our hearts on cotton, brick, and sugar, that is basic raw materials of our daily lives. That is basically the cotton of the clothes that we wear, the bricks our homes and offices are made of, and the sugar that we eat. There was a time when it was quite easy for people to identify the source or the origin of what they would wear, of what they would use to build their homes or their offices, of what they would eat. But the modern world, globalization, urbanization, they've all made it much harder for us today to trace those sources. If we take bricks, for example, there's no denying that there's a global housing crisis that engenders and triggers a construction frenzy. Even more so in India, lots of people desperately need a roof over their heads. But the first question is, does the end justify the means? That is, should this priority, which is a genuine priority, give excuses for, make us forget about the human realities behind the production of building materials? Sugar is everywhere in the sweet dishes that we indulge in, but also in factory-made drinks and in ready-made meals that
busy city dwellers consume more and more. By the way, that causes serious health issues with obesity being on the rise worldwide. So there's an increase of sugar consumption that is due to population growth on the one hand, and the increase of incomes on the other end, and that mechanically translates into a growing need for sugarcane. Westerners hardly ever see what sugarcanes look like. When you get to India, there are sugarcane juice stands all over the cities. But whoever thinks about how tedious it is to cut sugarcane, simply, we just crave for juice and we just drink it. Whoever thinks about the everyday realities of the people who do this job. And then cotton, which inspires me even more. And it's today's topic. In the textile industry, the frenzy of the consumer society has led to incredible mass production. We went from a time when clothes were made to last. They were passed on from siblings to siblings, even from generation to generation. In the present days, these days of fast fashion, it's ever-changing, it's whimsical. And the fast fashion industry has made clothes disposable. They become outdated in the blink of an eye. There are global brands like H&M, like Zara, like Primark, to name a few of them. They built empires on a narcissistic society that is enslaved by social media and influencers. Thankfully, there are concerned citizens, the ones that care about the environment, for example. And now it's become something common to check labels, and we ask ourselves, what is the carbon footprint of this item? Was it made locally, or is does it come from the other end of the globe? Is it made of organic or recycled material? These are very valid questions. We're encouraged to feel more and more concerned with sustainability. And these questions are embraced by brands who use it more and more as a marketing tool. So there's eco-friendly, sustainable, organic, fair trade. We're all familiar with these labels. And don't get me wrong, it's a good thing. But how can we make sure when we are shopping that we're about to buy, that what we're about to buy is not the fruit of human exploitation? There are no labels for that. Do we even know what cotton production involves? Some would say that, some would blame people in general, guilt them, say that they don't care. But I believe that the real problem is not that we don't care, it's that the question doesn't even come to mind. I'm going to say something that is not really politically correct, but it's like the state of emergency our planet is in, which is undeniable, has somehow overshadowed the matter of the human condition. So I believe that the issues that will be tackled over these 3 sessions of Ahmedabad Parlons, they're first and foremost about educating people, raising their awareness. It's not about guilt. I don't think you can achieve anything great by guilting people. It's just about making us look in the right direction, about making us realize that there's a missing link in the chain of thought. These stations, to me, are about traceability. That is about going back to the roots of these essential products so that we can start asking ourselves the right questions and hopefully start finding answers. So your presence here tonight, I think is an encouragement for that, and it's a very good first step. So now I'm really happy to hand over the mic to
Rio, I salute you for being here to discuss these topics that are too often ignored. Thank you. In fact, I think you spoke half of what I thought I'd speak after this. You just speak fast, I suspected. But I just add on to that. I think one of the things that I think you said was very interesting is that we don't know the source of where the items come from. And there's a very interesting point somebody made in a book I read a couple of years ago, which says that if we, even today, most of us access our water from the tap. आजकल हमारे पास कुएं नहीं, हम कुएं से पानी नहीं भर के लाते हैं, ना नदी से पानी भरते हैं। लेकिन अगर हम अपनी बिल्डिंग में मान के चलिए हम शावल पे हैं, रेडियंस में हैं, अगर रेडियंस का पानी बाजू के कुएं से आता है या बाजू की नदी से आता तो शायद हम उस नदी को पोल्यूट नहीं करते, क्योंकि हमें पता होता है कि पानी वहाँ से आता है। Today we don't know where the water is coming from. We don't know whether it's coming from Sabarmati, from Narmada. It could be thousands or hundreds of kilometers away. So we are okay with any kind of pollution happening because we don't know the source. And I think that is the story that you said, the traceability is what we are trying to do here. And initially, I think when we met, we had these discussions and I've been quite conflicted about this, that whether should we educate people or on one hand should we shame people? Because there are times when I am also tempted to shame people. That we have become so thick-skinned about a couple of these issues. And especially like what you pointed out, that as times change, there are different issues that take center stage. So poverty, for example, as an issue was very relevant to India years ago. Today, garibi ki baat nahi hoti. It's probably lost its glamour, maybe we've gotten too used to the issue, we don't talk about it as much. But the fact still remains that India today has more people suffering from malnutrition than sub-Saharan Africa. And even in that, Gujarat is still one of the top 5 states in India when it comes to malnutrition. Did somebody know this? You know this, right? Gujarat, we might be growing at whatever percent, we might have vibrant Gujarat, but we still have a large population that suffers from malnutrition. In fact, just as you step out of this and go to any traffic junction, you will see these very sickly babies. And yes, I understand the begging itself is a whole practice or a whole industry in itself, but most of those children are coming from districts with high levels of tribal population who have malnutrition. Just where you see them, they are sickly, they are small. So I think it's important to do that storytelling, that relevance of these issues. I will now ask Sudhir ji to come on stage. उनका formal introduction आप यहाँ पढ़ सकते हैं. मैं आपको informal introduce करूँगी कि Sudhir ji से we got in touch a couple of years ago, concerned citizens who work on policy issues. But we also didn't realize the depth of exploitation that happens in these industries. And it was especially surprising because if you listen to him, or if you speak to him as a man, he's very gentle, he's very shy, he's very soft-spoken. But he's taken on some of the biggest mafias, the sugar mafia, the brick mafia, the cotton mafia. And I think that's what I want to hear from him. I'll start with from where you ended, about taking on mafias. So we haven't really taken on such big mafias. But I'll just recall what one of my gurus told me. He said that, in society, the number of good people is definitely much, much more than the bad people. The problem is that the bad people are organized into a mafia. And good people are all sitting separately. So the best thing is that key task is that we start bring them together, and obviously we are much more in number and much more powerful. So I work with Center for Labour Research and Action, which is a labor rights NGO that works for the rights of informal workers. I've had a very regular middle class upbringing. I did my engineering, and then when I realized that engineering is not my cup of tea, so I did rural management from IRMA, Anand, which some of you would be familiar with. And after IRMA, I joined Pradhan, which is a fairly mainstream NGO, regular NGO, and I was working in a village in Rajasthan, South Rajasthan, in a tribal area. And I worked there for 3 years. We did some water resource type of work, and I was not very happy. I mean, I always had a sense of dissatisfaction. Basically, because I realized that the people we were working for, they always saw us as outsiders. That some people who come from outside, they are telling us this thing. There's always a conflict going on between us and the local people. So then I shifted gear, and then I stayed in a village called Sarwadia, which again is located near quarry mines, and we tried organizing quarry workers.
So I stayed there for 4 years. And actually, one of my colleagues from that village, Shantilalji, is still with us. This is like quite long back in 90s. And we have had many episodes in history where people from middle class, they have young youth from middle class, they've gone to villages and stayed there. And there's a one episode which Nehru relates in his autobiography, not autobiography, his glimpses of world history, 19th century Russia. A lot of Russian students went to villages to organize the villagers against the Tsar. And he writes that the villagers caught them and handed them over to the Tsar police. These people have come here. Fortunately, that did not happen with us. We were much more strategic in our approach. My colleague was from a local village only. So why I'm narrating that incident, that episode in my life, because if I look back at my life and what I've learned at different pages. So in terms of learning about society, I think that was the most critical period of my life when I learned maximum. I realized what Indian society is really like it is. And if I was to say what Indian society is all about, in one word, I would say it is about caste. In villages, when I was living there, and we were moving around many villages because we are mobilizing workers, we are mobilizing people. First question you get asked is, what is your caste? And then everything flows from there. And I can tell you that it has not changed. A lot of people say that caste system is a relic of the old and things have changed. But my daughter, she's right now in a village and she's repeating the same thing to me. That wherever I go, first question I get asked is, what is your caste? So I'm bringing up the caste question also in the context of the work that we are doing. So I said we work with informal workers, unorganized workers in construction, brick kilns, and many other sectors, agriculture. And if we look at our workforce in terms of the number of people who are working, productive working, there's a stark division between the formal and the informal. The informal workers, they are organized, they get benefits of the labor laws, they have 8-hour workday, they have social security, they have weekly holidays, they get decent wages. And if you look at informal workers, they have none of this. And over the next 3 days, we will be talking about it. What is the situation of the work in informal workers with the informal workers? Wages are rock bottom. In a place like South Gujarat, when we were doing a survey, the Halpati agriculture workers, they were getting something like rupees 100 per day. I mean, just recently. There is no concept of 8-hour workday. For the majority of the workers, there is no social security. And if you meet in an accidental workplace, the employer will give you something like 5,000 rupees, 1 lakh rupees. That is the end of it. So now this caste system, we are talking about the caste system is basically about division of labor. And it goes beyond, and division of labor is of course there in every society, it has been there in every society. But the caste system goes beyond that. And as Ambedkar famously said, it is a division of laborers themselves. There are thousands of castes. And there are certain castes that perform manual work, certain castes that do not perform manual work. And if we look at our society today, we have replicated the same old caste system in the modern capitalist industrial society. As Renu just now said that we have an elite informal sector and a huge informal sector. We are now the largest GDP in the world, third largest GDP in the world, and what she said about the social indicators, the literacy rate and the malnutrition, the different other indicators of social progress. Now, what the key issue that I would like to flag before you is that how is it possible for such a huge amount of inequality to survive in a society? Because we are a democratic society and we do have elections at every level. We have elections at parliament, elections for states. So why is it that the workers' issues, they are not flagged in any election manifesto? Minimum wages is not an issue anywhere. Social security for informal workers, it does not get flagged any election manifesto. So that is the key question that we have to ponder and we have to work on that. And the answer, as I say, the Nobel laureate poet says, is floating in the wind. Thank you.
In fact, I think one of the things that he mentioned, which we also talk about with ASPP, we also run another portal called Mazdoor.co, which particularly looks at labor issues. You can check out our Instagram page. We are also on Facebook. We have a website. And Mazdoor.co, we typically talk about labor issues, but we also cover caste in some cases. And I remember there was this. Have you guys heard of this brand called Bakar Max? Anyone here heard of Bakar Max? You can Google it. Bakar Max is a very big Instagram page. It's an interesting page. It's a progressive page, but it talks about lots of socially relevant issues. Now, Bakar Max made this 1-minute video of this guy who goes to a store and he gets mistaken for the store boy. So this lady, this beautiful woman comes in and she asks him, "Bhaiya, ye kitne ka hai?" And he gets really offended. And then they show the same guy goes out and he gets mistaken for the Pani Puri vendor. The same lady goes to the Pani Puri vendor and she asks him, "Bhaiya, ye kitne ka hai?" And he's like, "Why can't she see me as something different? Why do I get mistaken?" And I think this happens in our society all the time. So we picked up this particular video to flag that if I mistake one of you accidentally as a film actor, if I accidentally, like Vinay is here, if I mistake Vinay as a film actor, or if I mistake him as a scientist accidentally, if I tell him, "Oh, are you a scientist? Are you an astronaut?" If I mistake you for a lawyer, you won't get offended. But if I mistake you for somebody who's cleaning the toilets, if I accidentally mistake you as somebody and I ask you, "Show me this bra in size 32B," you're going to get offended, right? And why is that the case? Why is this job better than this one? It's equally relevant, right? If for 10 days somebody doesn't pick up trash from our homes, won't our cities come to a halt? And yet we take offense if I mistake any of you, God forbidden, as a safai kachra wala, you will immediately get offended. You're like, "How dare you think of me as a trash picker?" So we still associate that caste system, like Sudhir Bhai said, in our cities. It's very much relevant in our everyday lives. And I think typically this happens a lot with, there are jokes also around this, that people get mistaken for Zomato delivery guys and they get offended. Again, it's a relevant profession, but why do we feel offensive? Our next speaker, I'll move on to Shanti ji. And शांति जी के बारे में ये कहना चाहूंगी कि हम मिले अभी हैं, लिटरली आई थिंक 10 दिन भी नहीं हुए मिलके शायद उनसे. सो बेसिकली इस टॉपिक पर रिसर्च करने के लिए मैं सूरत गई थी और सूरत में हम शुगर केन काफी ग्रो होता है सूरत के आसपास. देयर आर लॉट ऑफ शुगर फैक्ट्रीज, लॉट ऑफ शुगर केन फील्ड्स. एंड शांति जी टुक अस देयर एंड पूरा दिन उन्होंने हमें काफी अच्छे से समझाया कि भाई शुगर केन से शुगर का जो प्रोसेस होता है वो होता क्या है. And he is somebody who was actually a worker who became a union leader and eventually he's been working with CLRA. So he's seen it all, essentially. But today, what I want him to talk about particularly is about cotton. Because I think even today, if I ask you, what is cotton ginning, I don't know how many of us even know what is cotton ginning. Or for that matter, that once the ginning happens, the cotton seeds are actually used to extract oil. I don't think any of us know that. So, शांति जी से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमको खाली ये बताइए शांति जी आज यहाँ पर कि ये कॉटन के प्रोसेस में जब कॉटन का उगता है, उगने से लेके जब वो जिनिंग तक पहुंचते हैं और जिनिंग इंडस्ट्री में ये होता क्या है प्रोसेस, हम ये जानना चाहेंगे आपसे. थैंक यू रेणु जी. मैं थोड़ा हिंदी में बोलूँगा. तो मेरे पहले सुधीर जी ने सर ने बताया है कि ये जो अपन जो कपड़ा पहन रहे हैं, कॉटन का टी शर्ट है, अच्छा सा है, वो तो एकदम से सही फैक्ट्री से बना के रेडीमेड होके बाजार में आता है. लेकिन उससे पहले जो कपास है, जो कॉटन है, तो इसका जो प्रोसेस जो चेन है वो ऐसा है कि भाई खेत में कपास पैदा होता है, अपन सुनते ही हैं, लेकिन कैसे पैदा होता है. तो ये हमने शुरू में जब ये बीटी कपास, जो देशी कपास का बीज में तो कीड़े लगने शुरू हो गए, तो लोगों ने ज्यादा उत्पादन के लिए बीटी कपास का ये किया. तो बीटी कपास के बीज को पैदा करने में, जब बीटी का बीज पैदा होगा और उसको कॉमर्शियल बोएंगे तो किसानों को ज्यादा उत्पादन होगा. और उसी को लेकर के पहले बड़ी बड़ी जो कंपनीज है, मोनसेंटो है, नुजीवीडी है,
इस तरह की जो कंपनियां पहले हैदराबाद में उसका उत्पादन करते थे, उस पर कोई विवाद हुआ कि उसमें बच्चे काम करते हैं, ये करते हैं, तो उन्होंने अपने गुजरात में और उत्तर गुजरात में खास करके बनासकांठा, साबरकांठा और यहाँ उन्होंने बीज पैदा करना शुरू किया मोनसेंटो ने। और उसमें जो क्रॉस होता है मेल मादा और नर का, तो उसको करने के लिए, उस बीज को पैदा करने के लिए भी छोटे छोटे बच्चे को लाया जाता है। उसके हाथ कोमल होते हैं, बड़े नहीं होते हैं, फूल नीचे होते हैं, और कई सारे रीजन है कि वो बहुत कम मजदूरी में मिल जाते हैं। तो उसके लिए जब हम राजस्थान में इस तरह का माइग्रेशन पर एक सर्वे कर रहे थे, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, उदयपुर में, तब पता चला कि माइग्रेशन में सबसे ज्यादा किसमें हो रहा है। तो पता चला, वो एक ग्राम पंचायत का हम ऐसे ही छोटा सा सर्वे कर रहे थे, तो वहां से पता चला कि मतलब एक ग्राम पंचायत से कम से 1000-2000 लोग बच्चे जो हैं स्कूल वाले जो पढ़ने जा रहे हैं, वही अगस्त के महीने में रक्षाबंधन के उस समय से दीपावली तक वो सारे बच्चे गुजरात में मजदूरी करने जा रहे हैं। और क्या करने जा रहे हैं, तो बीटी कपास में बीज पैदा करने के लिए जा रहे हैं, बीटी कपास का। और बच्चों को अच्छी तरह से ट्रेनिंग भी हो जाता था कि भाई नर और मादा को मिलाना है, और जो ही फूल खिलना शुरू होता है उसको हटा देते हैं और दूसरे को क्रॉस करवाते हैं। तो उसमें देखा कि इतने सारे बच्चे हैं, और वो जब पता चला तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर जो ट्राइब इलाका है उदयपुर का, और गुजरात का जो साबरकांठा और बनासकांठा का कुछ हिस्सा है, वहां से सारे के सारे ट्राइबल बच्चे बीटी कपास बिहारण में आ रहे हैं। और 3-4 जिलों के इतनी बड़ी मात्रा में, क्योंकि बच्चे चाहिए, एक एक फूल को देखना है, इतना सारा बीज पैदा करना है, तो एक एक फूल को क्रॉस करवाना है, तो कितने मजदूर चाहिए। तो ये सारी कंपनियां, मोनसेंटो है, न्यूजीवीडी, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो बिहारण के लिए प्लॉट इशू करती है। तो हमने उस समय देखा था, और उसमें इतने सारे बच्चे बरसात में, मतलब 14 साल से नीचे के, 8-9 साल से लगा के 14 साल 15 साल के बच्चे सारे के सारे बीटी कपास में आ रहे हैं। तो अपन कॉटन जिसको बोलते हैं ना, कि अपने बच्चों के लिए अपन खुद अच्छे से पहन रहे हैं, कॉटन का टी शर्ट है, चलो अच्छा मिल रहा है, लेकिन उसमें जिसने बलिदान दिया है, जिनके वो पढ़ाई छोड़ के बीज पैदा करने के लिए आए हैं, तो बहुत सारी चीजें होती है उस कॉटन के टी शर्ट के पीछे। अगर अपन जाएं उसकी गहराई में, तो देखेंगे कि वो बच्चे वहाँ दवाई छिड़कते हैं। ऐसी घटनाएं हुई, हमने जब काम करना शुरू किया, तो एक लीडर होता है जो 40-50 बच्चों को लेके आता है, और उनकी मजदूरी क्या है, 30-35 रुपए उस समय 6-7 में थी, 30 रुपए रोज के बच्चों को दे रहे थे, 35 रुपए, मजदूरी भी कम थी। और कोई भी सब्जी जो कीटनाशक छिड़कते थे बैंगन के या किसी फल फ्रूट पे, तो बच्चे उससे मर जाते थे। उन बच्चों को पता ही नहीं था कि भाई ये सब्जी ये खाना है कि नहीं खाना है। बैंगन तोड़ के लाए, सब्जी बनाई, वो पूरे खेत पे रह रहे हैं, और ऐसी घटना घटी कि 5-4 बच्चे कीटनाशक से मर गए। ऐसी बहुत सारी घटनाएं। जब हमने बच्चों को तो क्या ऑर्गेनाइज करोगे आप, बच्चों के तो नहीं, लेकिन उनको लाने वाले उन्हीं के परिवार के थे, ऐसा नहीं था कि वो बाहर के वो थे। तो हमने उनको ऑर्गेनाइज किया कि भाई मजदूरी बढ़नी चाहिए और बच्चों को ये नहीं है। तो आज की तारीख में जब हमने एक पूरा राजस्थान गुजरात के बॉर्डर पे 2-3 साल में पूरा एक नाकेबंदी कर दी कि भी बच्चे जाएंगे नहीं, बच्चों को रोकना है। और वहाँ के डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर जिले के जितने भी ये मजदूर थे या ठेकेदार थे, उनको संगठित किया और नाके लगाए। तो आज की तारीख में हर साल गुजरात सरकार का लेबर डिपार्टमेंट और राजस्थान सरकार का लेबर डिपार्टमेंट आज भी नाके लगाता रहता है कि ये करेंगे, लेकिन बच्चे हुए कम हुए। अब जब वहां काम कर रहे थे तब पता चला कि वही मजदूर, उन्हीं में से कुछ बड़े 17-18 साल के और 15 साल के बच्चे वापस दीपावली के बाद वो जिनिंग फैक्ट्री में आते हैं। जिनिंग मतलब कि वो जो बीज पैदा करके गए, उसके बाद वहीं से कुछ मजदूर आते हैं कि कपास पैदा हो गया है और उसको जिनिंग के लिए फैक्ट्री में ले जाना, और उसको कपास को मतलब बीज को अलग करना है और
रुई को अलग करना है। जिनिंग का मतलब होता है कि अलग करो और वो प्रेस होके उसमें प्रेसिंग होके गिठान बनती है, प्रेस करके गिठान बनाते हैं, फिर उसके बाद धागा बनेगा। तो वहां से मजदूर आ रहे थे कि वो कुछ मजदूर, कुछ बच्चे वापस वो इसमें आएंगे, दीपावली के बाद जिनिंग शुरू होगी। तो कड़ी में एक बड़ा हब था जिनिंग फैक्ट्रियों का, तो उसमें बच्चे लेके आ रहे हैं और उसमें बच्चे आ रहे हैं तो वो 12 घंटे काम कर रहे हैं और 2 शिफ्ट में, वो भी रात में भी 12 घंटे और दिन में भी 12 घंटे। और जब हम कड़ी में काम शुरू किया हमने मजदूरों के बीच में, वही ठेकेदार लेके आ रहे हैं, एक पूरी प्रक्रिया है। तो जब हम पहली बार कड़ी में आए कि भाई ये वाले मजदूर वापस जिनिंग में भी जाते हैं तो जिनिंग का प्रोसेस देखते हैं क्या है। तो हम जब काम करने आए तो पहली बार हमको पता चला उसी साल कि रात में बच्चे काम कर रहे हैं जिनिंग फैक्ट्री में, और वो जो बीज जो है वो उसका तेल निकलता है जिसको कपासिया बोलते हैं, और कपासिया का तेल खाने में काम में आता है। तो वो जब कपास की फैक्ट्री में वो रुई अलग होती है, बीज अलग गिरता है, तो उसको क्या है कि बड़ा ट्रोला होता है उसको अलग ऑयल मिल में ले जाने के लिए बीज को। तो वो बीज जब इकट्ठा होता है वहाँ क्या है कि डायरेक्ट उसके नीचे जहाँ बीज गिर रहा है वहाँ ट्रोला लगाते हैं, और वो रात भर 1-2 बच्चे उसको, ढेर एक जगह हो जाएगा तो उसको समतल करने के लिए बच्चों को चढ़ा देते हैं। तो उसी साल, पहले साल हमने देखा कि उसी ट्रोले में वो बच्चा रात में 12 घंटा ड्यूटी कर रहा है और उसी ट्रोले में वो कपासिया समतल करते करते वो उसी में सो गया है, उसको नींद आ गई है और ऊपर से बीज गिर रहा है और पूरी ट्रॉली भर गई है। वो बच्चा नीचे नींद में ही दब गए और किसी को पता नहीं है कि बच्चा कहाँ गया है। जब वो ऑयल मिल में जाएगा तब पता चलेगा कि वहां बच्चे निकले नीचे से मरे हुए। और ऐसी 5-6 घटना, मतलब साल में 7-8 घटनाएं हो गई पहले साल ही जब हमने ये काम शुरू किया। और बच्चे वहाँ राजा जिनिंग में घटना हो गई, पशुपति में हो गई, लक्ष्मी में हो गई, इस तरह की हर जिनिंग में बच्चे दब रहे हैं कपासिया में। और वो सुबह पता चलता है कि बच्चे कहाँ गए हैं, ढूंढेंगे तो वो वहां से खोदेंगे भी कैसे, वो तो पूरा ट्रक भरा हुआ है ट्रोला। और जब वो उसको ऑयल मिल में ले जाके ऐसे उलाड़ेंगे तब अंदर से बच्चे निकलेंगे। तो ऐसी घटनाएं, बहुत सारी घटनाएं होगी। अब तो शायद उसको थोड़ा ये कम हुआ है घटनाएं, तो इस तरह की घटनाएं होती है। तो ये जो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप बीज पैदा करने में बच्चे हैं, उसको जिनिंग करने में बच्चे हैं, और वो इस तरह के जरूरतमंद बच्चे हैं। और अपन एक सोचते हैं कि भाई एक अच्छा सा कॉटन का टी शर्ट पहन लेते हैं, कॉटन का शर्ट पहनते हैं, लेकिन उसके पीछे अपन अगर गहराई में जाएंगे तो किसी ने कुछ न कुछ बलिदान दिया हुआ है। और वो इसीलिए अपन अच्छा सा कॉटन का शर्ट पहन रहे हैं क्योंकि वो जो उनके जो बच्चे हैं 12 घंटे, छोटे बच्चे, उन्होंने जिनिंग में या वो कपास काम करने के लिए उन्होंने समय दिया है। तो वो ना तो पढ़ पा रहे हैं ना कुछ नहीं है। अपने बच्चे इसीलिए पढ़ रहे हैं कि भाई उन्होंने उस कुर्बानी की है, उन्होंने इतनी मेहनत की है, उसके पीछे लोग मरे हैं और जान दी है, इसके बाद अपने को वो एक कॉटन का टी शर्ट मिल रहा है। और ये सारी चीजें क्या है कि एक पूरा चेन है इस तरह का कि वो बच्चों को क्यों ला रहे हैं किसान लोग कि बच्चे छोटे हैं, सस्ते मजदूर मिल रहे हैं और उसको ज्यादा से ज्यादा मुनाफा होगा, इसीलिए वो जिनिंग में भी बच्चे ला रहे हैं। अब वो मालिक जो जिनिंग में बच्चे ला रहा है या सस्ते मजदूर ला रहा है, उसके बाद जो कपासिया खरीदने वाला है या कपड़े के मिल मालिक हैं, टेक्सटाइल वाले, तो वो भी ऐसा ही करेंगे कि सस्ता कपास मिल जाए अपन को और ज्यादा मुनाफा कमाए और बाजार में ज्यादा बिके। तो एक दूसरे का, लेकिन उसके पीछे जो लास्ट शुरुआत करने वाला जो है वो तो इतना सस्ता मजदूर मिल रहा है आपको। तो मैं बहुत सारी चीजें हमारी कुछ बीटी को कपास के ऊपर भी एक अध्ययन किया हुआ है, जिनिंग के ऊपर भी अध्ययन किया हुआ है और एक केस भी आया हुआ है। तो ऐसे हमको भी पता नहीं था कि भी ये है। हम जब बीटी कपास में काम कर रहे थे तब जिनिंग का पता चला, जिनिंग का जब
जिनिंग में काम कर रहे थे तब ईंट भट्टे का पता चला, और ईंट भट्टे के बाद जब हम ईंट भट्टे का काम कर रहे थे तब शुगर केन का पता चला कि यहाँ पे भी मजदूर हैं। तो इस तरह से ये हमारा काम है। धन्यवाद। थिंक शांति जी ने जो कहा हमारे साथ एग्जैक्टली वही हुआ। तो हमने लेबर का काम शुरू किया था कोविड के टाइम, क्योंकि हमें लगा कि कोविड के टाइम हम तो घर बैठे हैं पर लेबर का क्या हो रहा है। तो हमने पहले राशन की डिस्ट्रीब्यूशन करनी शुरू की, तो उसके बाद गवर्नमेंट के फ़ोन आने लगे कि भाई यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूट करो, वहाँ भी डिस्ट्रीब्यूट करो। फिर हमने मजदूरों को घर भेजना शुरू किया, श्रमिक स्पेशल ट्रेन शुरू हुई। और जब हमने लेबर पे काम करना शुरू किया तब हमको लगा कि ये तो हम खाली इमरजेंसी में काम कर रहे हैं, कोविड एक इमरजेंसी है और इसलिए हम लेबर पे काम कर रहे हैं, पर पूरे साल हमारे आसपास लेबर सब जगह होता है, राइट। आपके घर में जो काम करने वाली आती है वो भी लेबर है, उसको भी हम छुट्टी देते हैं कि नहीं देते हैं? हाउस हेल्प को हम संडे ऑफ देते हैं? टिपिकली नो, राइट। दे वर्क 30 days a month. There is no concept of maternity leave for a house help. There is no concept of medical leave for a house help. There is no concept of pension. And these are people who need it the most, because at the age of 60, you and I can become consultants, right? They can't become consultants. In fact, what they do is manual labor. So after the age of 60, you're actually going to not be able to do as much work, which means you need even more social protection than those of us who do the intellectual labor. And yet, this is the most vulnerable class which gets left out. And this is what happened to us also, that as we started looking into the labor issues, we also realized कि labor is not just in the city, outside the cities. In fact, आप में से कितने लोगों को पता है कड़ी कहाँ पर है? कड़ी गया है कोई? कड़ी बहुत नजदीक है, right? So imagine Ahmedabad में रह के, when you and I are sitting in this nice air-conditioned conference room, कड़ी just 1.5 hours away from Ahmedabad, वहाँ पे ये हो रहे हैं incidents. And these are real, I can tell you that, because हम लोग खुद अभी just last week हम लोग ढोलका गए थे और इसी रिसर्च के बारे में करने, क्योंकि मैं कभी आज तक ईंट भट्टी पे नहीं गई हूँ। तो I just wanted to take a few pictures. I thought I'll go to the bricklin, take a few pictures, and then bring the pictures back so that we could create all the publicity content. And so initially we had thought of going to Sitpur. You guys might be familiar. Sitpur is in Patan, very famous for the Patan saris. But Sitpur also has a huge cluster of bricklins. And it so happened that I have a tendency to take pictures, like all of us, right? We, in the age of social media, we keep taking pictures. So as soon as we landed there, I was with my phone taking pictures. And then we were promised by one bricklin owner that he would let us give access to his particular bricklin so I could go inside and take pictures of all the workers. So we said, okay. The moment we reached that bricklin, we got ambushed by 20 or so cars which were belonging to bricklin owners, because they came to know that these people have come from the city and they are going to actually talk to workers about increase in wages. So they stood in front of us, 20 or so cars, and this was my first visit to a bricklin, and Sudhir ji knows about this. And thankfully, I think Ramesh ji, who's sitting here, he gave me the number of the local collector. So I called the collector, and I don't know if I should thank all the rape incidents happening in the country, but because of that, there is so much awareness that everyone is always scared when a woman calls. So the moment I called the collector, he got really scared. I said, I'm standing here, I'm surrounded by 20 men. There are like 20 cars here, and I don't know what to do. So thankfully, in the next few minutes, there was a police van that came, and we spent the next 7 to 8 hours in the police station, just because the bricklin owners didn't want us to go inside the bricklin. So you can imagine how difficult the conditions in which CLRA, the people of CLRA are working in, would be to actually go inside a cotton ginning factory, to talk to workers, to find out the conditions. And this is all very near to Ahmedabad. Dholka is 2 hours, Sitpur is 2.5 hours, Kadi is 1.5 hours. So the reality is very close to us that we somehow are not aware of. प्रवीण से मैं बात करना चाहूंगी, पर प्रवीण को बहुत मुझे लगा था ये होगा। प्रवीण, स्टेज पे आने की जरूरत नहीं है, बैठे बैठे बात करोगे। दयाल भाई साथ में आपके बैठेंगे, ठीक है? दयाल भाई भी बैठेंगे आपके साथ। प्रवीण एक्चुअली उदयपुर से आए हैं, खास आज बात करने के लिए ही। और प्रवीण काफी अभी तो थोड़े बड़े लग रहे हैं, बट जब वो काम करते थे तो बच्चे ही थे। और उस समय उनका ये जो आप हाथ देख रहे हैं जो नहीं है, वो एक कॉटन जिनिंग के टाइम ऑयल, कॉटन जिनिंग के बाद ऑयल होता है। आई थिंक भाई ज्यादा बेहतर बताएंगे। हैं प्रवीण, कैसे वो आप ही बताएंगे? दयाल आपको हेल्प करेंगे। मुझे नहीं पता कैसे हुआ ये हाथ कैसे कटा, बताओ।
बताओ। दिल्ली के रहने वाला, गढ़ावन सागवाड़ा। हाँ। और अब मुझे बताओ, आप ऑयल फैक्ट्री में क्या करने गए थे वहाँ पे? काम, गांव में क्यों नहीं काम करते हैं? गाँव में वहाँ पे काम मिलता है 250। Do you mind if we take this sitting here? I think it might be more comfortable. Yeah. So I'll just tell you in advance for the next 2 days of talk series also. So Praveen has come alone, but for tomorrow, in bricklins and in sugarcane factories, typically you have couples working. In fact, entire families work together. So what happens in a bricklin is that not just the worker migrates, but the entire family migrates. And in Gujarat particularly, these families come from Chhatisgarh, from UP, from Jharkhand, from Rajasthan. So what we have done is, for tomorrow we have actually a couple, a male and female, a husband and wife, who work in a bricklin, who are coming here to talk about their story. And day after in sugarcane, we actually have 2 couples, again husband and wife, who work together. So it's like a, you'll be surprised to know that they get paid only for one. In our country of patriarchy, the woman isn't considered labor. So they actually get paid only for one person, but the couple works together 14 to 16 hours a day. बैठ के बात करते हैं, हाँ? आ जाओ, बैठ जाओ, कोई कुछ नहीं। दयाल भाई, तब तक आप 5 मिनट थोड़ा समझाएंगे, जिनिंग के बारे में थोड़ा बात कीजिए। दयाल भाई से भी हम अभी मिले सूरत की ट्रिप में ही, और दयाल भाई भी बहुत टाइम से CLRA के साथ काम कर रहे हैं, और जिनिंग का खास इनको पता है, इसलिए मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि थोड़ी सी जिनिंग के बारे में बात करें। गुजराती चाल से, हिंदी चाल से, इंग्लिश में। मेरा नाम दयाल ठाकुर है और मैं 2008 से CLRA के साथ जुड़ा हूं, और कड़ी में जिनिंग क्षेत्र भी है, कंस्ट्रक्शन भी है और दूसरी इंडस्ट्रियल एरिया भी है। 2008 में मैं जुड़ा तब जिनिंगे 122 जिनिंगे अभी कड़ी में है चालू, और पूरे गुजरात में 500 जिनिंगे है। इसमें सबसे ज्यादा कड़ी विस्तार में ही जिनिंग मिले हैं, और कड़ी के आसपास के जो ब्लॉक है, विजापुर है, ईडर है, वडाली है, ये ऊंझा है, जो प्रवीण का एक्सीडेंट हुआ वो ऊंझा विस्तार है, विसनगर है, ये सभी जगह पे जिनिंग मिले हैं। जिनिंग मिले में ज्यादा शांतिलाल ने बताया कि जो आदिवासी बेल्ट है, जो साउथ राजस्थान वाला, जो डूंगरपुर है, उदयपुर है, बांसवाड़ा है, वहां से मजदूर आते हैं, और चाइल्ड लेबर ज्यादातर जो जिनिंग में चरखा मशीन आते हैं, जिनिंग में जो रुई डालना है, चरखा मशीन आते हैं, इसमें से कपासिया निकलता है। तो चरखा मशीन में ज्यादातर चाइल्ड लेबर ही काम करते हैं, और 12 घंटे की शिफ्ट होती है, 24 घंटा जिन चालू रहती है। तो पहले जिनिंग में 40 से 50 मजदूरों की जरूरत पड़ती थी। अब क्या है, ऑटोमेटिक सिस्टम भी आ गया, चाइल्ड लेबर का बहुत इश्यू भी उठता था। हमने जो बहुत सारे एक्सीडेंट हुआ, तो एक्सीडेंट के हमने स्टडी की, रिसर्च करके फिर आगे एक जनसुनवाई की। जनसुनवाई में जज को भी बुलाया हमने, ये जो हेल्थ सेफ्टी डिपार्टमेंट वाले हैं, गवर्नमेंट वाले, उनको भी बुलाया, और सभी मजदूरों को भी जिसका एक्सीडेंट हुआ वो मजदूरों को भी हम लाए, और पूरे ये हमने सामने ही रखा, गवर्नमेंट के सामने भी रखा, और फिर एक्सीडेंट भी कम हुए। तो बहुत सारे केस ऐसे आते हैं, बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं कि किसी की हाथ कट जाता है, किसी का पैर कट जाता है ना। तो बहुत एक्सीडेंट होता है। तो एक्सीडेंट में हमने ये किया, जन सुनवाई किया। तो जन सुनवाई के बाद उनको मुआवजा भी हमने WC में भी केस फाइल किया। कुछ मालिकों ने कंसल्टेंट्स के साथ रह के उनको मुआवजा भी दिया। कुछ हमने लेबर कोर्ट में केस करके किसी को वर्तर दिलवाया। तो ऐसा ही हमारा एक बंशीधर जिनिंग का केस था, अनिल मंगला भगोरा। इनको ये 13 साल का ही था और कड़ी में ही ये जिनिंग आई। तो हमने पहले जिनिंग का जो कंसल्टेंट्स है उसने दवा करवाई, बाद में किया कि 7,000 कंपनसेशन होता है तो 7,000 दो। उसने बोला कि 3-3,500 में देने वाला हूं। फिर जिनिंग का मालिक उनको ले जाता है, अनिल को, उनकी जिनिंग में, बंशीधर जिनिंग में 3 महीने तक रहता है। हमने पुलिस में भी FIR करने की कोशिश की, DCPO जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बैठते हैं उनको भी बात की, लेबर डिपार्टमेंट को भी बात की, हेल्थ सेफ्टी डिपार्टमेंट को भी बात की, लेकिन इससे कुछ हुआ नहीं। फिर हमने SDM के सामने उसको पेश करने की बात की तो मालिक लेके आया और फिर मालिक SDM ने बोला कि
उनको हम मालिक के साथ जाने देते हैं, वो मजदूर जाने के लिए तैयार है इनके साथ, लेकिन उनकी तब 14 साल की ही उम्र थी, उनके माँ बाप के सामने भी नहीं जाने देते थे। तो हमने पूरी गवर्नमेंट जो मशीनरी है, डीसीपीओ है, कलेक्टर है, एसपी है, ये सभी को ज्ञापन दिया और उनको छुड़वाया और 9 लाख रुपया हमने एक केस में भी दिलवाया। तो बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं इसमें। जिनिंग में ज्यादातर अलग अलग प्रकार के काम होते हैं। चरखा वाला जो काम है, आदिवासी बेल्ट से जो लोग आते हैं वो करते हैं। लोडिंग वाला काम बिहार के मजदूर है वो करते हैं। और दूसरा जो प्रेसिंग मशीन पर जो प्रेस वाला जो काम है, प्रेसिंग वाला जो मारवाड़ी मजदूर आते हैं कपास कोड़ का, और ये करते हैं। अभी स्पिनिंग मिल भी शुरू हो गई है तो झारखंड के भी लेबर आते हैं। तो ज्यादातर स्पिनिंग मिल में नहीं है, जिनिंग में ज्यादातर चरखा वाला जो मशीन है इसमें चाइल्ड लेबर ज्यादा है। ये गजानन जिनिंग में जो उंझा के कोहड़ा गांव है उधर आई। प्रवीण का एक्सीडेंट तब हुआ था नवंबर 2020 में आया, उनके गांव के ठेकेदार लेकर आया और 8 तारीख को लेकर आया था इनको, नवंबर 8 तारीख को, और दिसंबर की 6 तारीख 2020 को उनका एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट होने के बाद वो ऑयल मिल थी, ऑयल मिल में जो घाना है, जो तेल बनता है, ये तेल में जो एक कपास पिलाया नहीं पिलाया, तो वो देखने गए और उनका हाथ आ गया और हाथ कट गया। बाद में मालिक का लड़का उनको महसाना में राधनपुर चौकड़ी संजीवनी हॉस्पिटल है उधर लेकर उनको आया। इनका भी हॉस्पिटल में सारवार करवाया। फिर हमारे पास केस आया, बीच बीच में मालिक ने उनके साथ सीधा कांटेक्ट करके बोला कि लाख रुपया हम दे देते हैं, आप समाधान कर दो। तो हमारा केस अभी भी डब्ल्यूसी में, अभी लेबर कोर्ट में महसाना चालू है। तो ज्यादातर जिनिंग मिलों में हमारे पास जो केस आते हैं, तो हम पहले जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उनको जान करते हैं और बाद में उनको मुआवजा दिलवाने का भी प्रयत्न करते हैं। ज्यादातर हमने जो जन सुनवाई की और एक्सीडेंट का केस सामने लाया, तो एक्सीडेंट भी कम हुआ है, जन सुनवाई से ये जो चाइल्ड लेबर है, चाइल्ड लेबर भी कम हुआ है। अब अलग अलग विस्तार से हमारा जो काम है, तो ठेकेदार आते हैं तो ठेकेदारों की भी हम मीटिंग करते हैं क्लस्टर लेवल पे। कड़ी में ज्यादातर जिनेंगे अब कम हो गई, अब 75% ही चालू है। तो हम ठेकेदारों की मीटिंग करते थे और ठेकेदार की मीटिंग से ही बात होती थी कि किसको किसको एक्सीडेंट हुआ, कहाँ हुआ। तो हमारे पास अलग अलग विस्तार से केस आने लगे, राजकोट से भी, गांडल से भी, हारिज से भी। अभी इनके ठेकेदार ने ही हमको बताया कि हमारे यहाँ कड़ी से 70 किलोमीटर है ऊंझा, और ये तो यहाँ से भी हमारे पास केस आते हैं। विजापुर 55 किलोमीटर, यहाँ से भी हमारे पास केस आते हैं। तो हमारा क्या है, ठेकेदारों का साथ हमारा कांटेक्ट रहता है और ठेकेदार किसी भी जिनिंग में होता है तो हमको बता देते हैं। थैंक यू। और क्या होता है कि ट्राइबल इलाके में बच्चे जो है वो अक्सर छुट्टियों में काम करने आते हैं। वो जो पढ़ते हैं ना स्कूल में, वो भी जो छुट्टी होती है तो वो काम करने आते हैं कुछ कमाने के लिए। उसी में ही आया ये 12वीं के बाद, यानी कि ये ऐसा रेगुलर वर्कर नहीं था, ये 12वीं के बाद कुछ पैसे कमाने के लिए आया ये, तभी इसका एक्सीडेंट हो गया। ये बहुत इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया। अभी भी वो पढ़ाई कर रहा है, 2nd ईयर BA में है। एक्चुअली हमारा एक गोल रहा है ASPP का कि CLRA जैसी संस्थाएं हैं जो ग्राउंड पे काम कर रही हैं, जिनको हम जानते भी नहीं हैं, जिनकी मतलब ऐसे ग्लैमरस वेबसाइट या इंस्टाग्राम पेज नहीं होगा, क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं है। मैं आपको बताऊंगी, जब हम लोग गए विजिट करने शुगर केन इंडस्ट्री को, तो हम सुबह निकले थे, सूरत पहुंचे, और मुझे याद है कि हम कम से कम हमने शुगर केन फील्ड पे गए, हमने काफी लेबर से बात की वहां पे। उसके बाद हम शुगर केन फैक्ट्री गए, उसके बाद हम जहाँ पे वर्कर्स रहते हैं वहां पे गए, उसके बाद हम जहाँ पे मालिक रहते हैं, जस्ट टू सी द कॉन्ट्रास्ट इन द हाउसेस, वहां पे गए। और उसके बावजूद कितने 7 साढ़े 7 बज गए थे, हम थक चुके थे एंड हमें वापस आना था, लेकिन उनमें अभी भी एनर्जी थी। उन्होंने बोला कि नहीं, हम आपको और भी चीजें दिखाते हैं। सो वी रियलाइज दैट द डेडिकेशन ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशंस नीड्स टू कम आउट। Just because if there is a language barrier or a barrier in terms of the work that they do, we don't even have access, we don't even realize what is happening. And all the places Dayal Bhai named, right? Dayal Bhai mentioned a lot of areas.
These are villages and towns which are near Ahmedabad. They are not that far. But the fact remains that just because we are ensconced in these daily lives of Ahmedabad, we don't realize what is happening outside the city. At this stage, what I would do is I will close this in terms of our part and I'll open it to questions. But before that, I know Praveen is feeling very shy, but मैं चाहती हूँ प्रवीण थोड़ा बहुत तो बात करे. तो मैं थोड़ी सी प्रवीण से बात करूंगी और उसके बाद आपको कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं. And once we wrap up, also we'll have tea outside. It's open session. You can still talk to the people here. Mike, दे दें प्रवीण को. भाई इतने अच्छे नंबर आते हैं, बात तो करनी पड़ेगी ना. प्रवीण मुझे खाली ये बताओ कि अच्छा मुझे बताओ आपके गांव में आपके घर में कौन कौन है? मेरे परिवार में मतलब 3 भाई और 1 सिस्टर है. 4 और मदर फादर 6 लोग ही रहते हैं. 3 भाई 1 सिस्टर. हाँ. और मम्मी पापा क्या करते हैं? मम्मी पापा कुछ नहीं कर सकते. अपना डिस्ट्रिक्ट कौन सी है आपकी? उदयपुर. हाँ. और ब्लॉक? ऋषभदेव. गांव का नाम? गड़ावन सागवाड़ा. सागवाड़ा. अच्छा, how many people here know that districts are divided into blocks? Do we know that? Right? That's also a very basic governance unit. Most of us don't even understand districts and blocks. But India has what? 663 something districts, right? Almost 650 districts. And we would probably know the reality of only 4 cities. Ahmedabad, Delhi, Bombay, Chennai, whatever's happening there, we get to know. But what's happening in the 650 districts outside, we don't even get to know. अच्छा, गांव में जमीन है आपके घर में? है. कितनी? 2-3 बीघा. 2-3 बीघा. तो जमीन पे काम करके उससे इनकम नहीं बनती है? नहीं बनती है. नहीं. तो आप ये जो काम करने आए थे, किसने बताया इस काम के बारे में? इसके काम के बारे में वहाँ हमारे पड़ोस के गांव में ठेकेदार था, वो आया था और बोला कि चलो काम पे मतलब अच्छा पैसा मिलेगा, यूं करके तुम्हारी पढ़ाई. मैंने भी छुट्टियां थी तो मैं दिन के 300 रुपये देंगे, 12 घंटे काम करना पड़ेगा यूं करके. तो मैं वहाँ चलो थोड़े दिन करके आते हैं यूं करके वहाँ से घर से निकल. तो आप अकेले आए कि आपके साथ कोई आया था? मेरे साथ में आए थे. ठेकेदार आए थे कि नहीं परिवार से कोई आया था आपके साथ? परिवार से पिताजी थे. वो छोड़ के फिर गए आपको? हाँ. और कहाँ पे था ये आपकी जो फैक्ट्री? ऊंझा में? हाँ, कौड़ा रोड, गजानंद ऑयल मिल. हाँ. और आप पहले गुजरात आए थे कभी? नहीं. आपकी उम्र क्या थी जब आए यहाँ पर? एज 19-20 साल होगी. और जिस दिन ये हुआ तो उस दिन उसके बाद तुरंत क्या किया? कटा हाथ, उसके बाद तुरंत क्या हुआ? तुरंत तो कुछ नहीं. मैं वहाँ हाथ मेरा एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद बाहर निकला, फिर फोन किया और मेरे को हॉस्पिटल लेके गए. वहां से फिर 3 दिन एडमिट किया हॉस्पिटल में और 14 दिन छुट्टी दी और वहां लेके आए. फिर परिवार से कोई आया था? परिवार से नहीं है. So when we talk of migrants, I think one of the most interesting aspects is that we as urban rich migrants have a very different life than a poor migrant. So if I migrate to Bangalore for an IT job, then I get the best of housing, the best of hospitals, the best of pubs and cafes and the best of life. But when a poor migrant comes to the city or the state, now look at this boy, he's 19 years old, he's never been out of his village. Forget about the district, he's never been out of his village. He comes to a completely new environment, not knowing anyone, not knowing whom to trust. And remember, a lot of this has happened before smartphones. अभी फोन होने से क्या होता है, हम घर फोन करके बता सकते हैं, हम फोटो भेज सकते हैं, उनको थोड़ी पता लगता है. पर फोन के पहले तो बच्चे जब माइग्रेट करके आते थे, आप इमेजिन कर सकते हैं, पेरेंट्स को पता भी नहीं बच्चा कहाँ पे है, कौन सी रोड है, एड्रेस क्या है, मिल के मालिक का नाम क्या है, अपने राइट्स क्या है, कौन सा लेबर लॉ लगता है. 19 साल के बच्चे को कहाँ से पता होगा ये? और तभी बच्चे यहाँ पे आते हैं, माइग्रेट करते हैं. तो ये जो केस चल रहा है आपका, कभी केस किस बारे में है? ये तो लेबर कोर्ट में कोई केस चल रहा है ना आपका? तो केस किस बारे में, मतलब ये मुआवजे के बारे में है? जी. अच्छा, और मुआवजा कितना मांगे हैं? 10 लाख. अच्छा, आपके भाई बहन क्या काम करते हैं? पढ़ाई कर रहे हैं. कहाँ पे?
राजस्थान में। और आपको काम क्या करने का शौक था? आप तो ये करने लगी क्योंकि पैसे की जरूरत थी, पर आपको करना क्या था? काम क्या करना चाहते थे? हाँ? नौकरी? नौकरी? कैसी नौक- नौकरी करनी है? नौकरी सरकारी जॉब करनी है मेरे को। सरकारी जॉब? हाँ, सरकारी जॉब क्यों करनी है? क्योंकि अब कुछ कर नहीं सकता हूँ मैं काम, इसलिए मैंने एक बात जोर दी को मैं नौकरी लग के ही छोड़ूंगा ये। हाँ, हाँ। क्योंकि हमारे पास आई थिंक अब खाली 30 मिनट्स हो गए हैं, 30 से भी कम शायद। ऑडियंस में से अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो वी कैन टेक देम नाउ। एनी ऑफ यू हैव एनी क्वेश्चंस? एनीथिंग यू वांट टू आस्क, यू वांट टू टॉक? शांतिलाल जी से पूछना था कि ऐसे आपने वो कड़ी और दूसरे इलाकों के बारे में बात किया, तो कितने विमेन लाइक लेबरर भी है, यानी औरतें भी कितने काम करते हैं? ओढ़नी ओढ़ के वो चरखे में रुई डाल रही है और ये आ गया। तो मतलब आधे आधे हैं। और हमारे जो हमने जो सर्वे किया है, जैसे दयाल भाई ने बताया कि भी अभी कुछ मजदूर कम हुए हैं। शुरुआत में ज्यादा मजदूर चाहिए थे, थोड़ा सा ऑटोमेटिक किया है, जैसे रुई डालने वाला, खिसकाने वाला, ऐसा कुछ थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। और अब कड़ी से ज्यादा जो मॉडिफाई कारखाने हैं वो गोंडल में है। यही मालिक हैं कड़ी वाली, लेकिन ये पुराने कारखाने हैं। अब जो नए जो कपास सौराष्ट्र में ज्यादा हो रहा है, तो यहाँ से कारखाने वो वहाँ नए नए कारखाने लगाए हैं, उसमें थोड़ा कम लेबर है। मतलब लेबर का मतलब आधा हो गया है। जो शुरुआत में जो लेबर यहाँ कड़ी वाले कारखाने में जो 40-50 लेबर लग रहा था, तो वो वहाँ 20-25 में ये कर रहे हैं। और कड़ी के आजू बाजू लोकल मजदूर भी हैं, लेकिन वो दिन के शिफ्ट में आते हैं। कड़ी के आजू बाजू जो ठाकुर कम्युनिटी के और जो भूमिहीन मजदूर लोग हैं, वो दिन की शिफ्ट में आएंगे। वो सुबह 6 बजे आएंगे, शाम को घर चले जाएंगे। और बाहर के जो मजदूर लाते हैं दूसरे राज्य से, वो क्या है कि रात में उसी कैंपस में रहते हैं और वो रात भर काम करते हैं। एक्चुअली में जिनिंग में हमने जिनिंग अदर्स मिल वर्कर्स यूनियन का रजिस्ट्रेशन करवाया था 2006 में 7 में, है ना। और उस समय एक्चुअली में क्या बहुत वो हुआ, उस यूनियन को तो हम ज़्यादा चला नहीं पाए, खाली रजिस्ट्रेशन हुआ। और जब हम काम कर रहे थे तो हमने क्या कि खाली न्यूनतम मजदूरी मांगी। उस समय 150 रुपये पूरे रात भर के मजदूरों को चुका रहे थे, और न्यूनतम मजदूरी थी 182-185 के हिसाब से। तो हमने केवल न्यूनतम मजदूरी के पर्चे छपाए, उसके बाद ही मालिक लोग भड़क गए। और हमारा जो ऑफिस था उसको हमको खाली करना पड़ा वहाँ से, क्योंकि मजदूर तो बच्चे हैं, ठेकेदार थोड़ा समझदार है, और उनको अगर न्यूनतम मजदूरी दिलाओगे तो आपके आंदोलन में कौन आपका साथ देगा। और मुझे तो उठा के ही ले गए वो कि ये मजदूरों को भड़का रहा है, ठेकेदारों को भड़का रहा है। तो राजा जिनिंग मिल में मुझे बाहर जब पर्चे बांट रहे थे या समझा रहे थे, तो मालिकों ने मुझे तोक के उठा के, उनके जो गुंडे थे उठा के जिनिंग में ले गए। फिर पुलिस को फोन किया, पुलिस वाले आए, फिर छुड़ा के लाए। तो बहुत सारे इसमें बहुत सारे झगड़े होते रहते हैं, लेकिन एक्सीडेंटली मामले में हमको सफलता मिली। बाकी चीज़ों में तो हम कुछ कर नहीं पाए। एक्सीडेंटली मामले में क्या हुआ कि जो डिपार्टमेंट है उनको भी हमने सूचित करते रहते हैं, तुरंत समाचार दे देते हैं, वो थोड़ा एक्शन में आया, तो उससे थोड़ा सुधार हुआ। इनमें चाइल्ड लेबर में भी सुधार हुआ, चाइल्ड लेबर भी वहाँ पे काफ़ी कम हो गया उसके बाद से। दूसरा ये भी कि जहाँ पर हमने उसके मसले की बात नहीं की यहाँ पर,
लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर में जहाँ पे भी लड़कियाँ काम करती हैं, महिलाएं काम करती हैं, तो जो यौन हिंसा है, सेक्स जो एक्सप्लॉयटेशन है, वो बहुत बड़ा इशू है. जिनिंग में भी बहुत बड़ा इशू रहा है और खेती में भी बहुत बड़ा इशू रहता है हमेशा. Good evening. Have you seen any significant progress, if any, over the last 20, 30, 40 years? In which directions where this progress is done? And what are the next steps, or thanks to your action, what are they? Because from an outside perspective, a newcomer in India, this might seem completely unsolvable. But for us, I think everybody here in the assistance is fully convinced about your action. So which direction, above from being, on top of being convinced, how can every one of us help? Because I am sure that it's a question of awareness, but every one of us can help. I would like to, but I have no idea what we can do to help. Yes, there has been progress. I mean, not as much as one would like to. See, the progress has been in terms of things like extreme exploitation, like child labor. So we are describing child labor in cotton seed plants, plantations, what Shantila ji was talking about. And we had like almost 100,000 children coming from Rajasthan to work in Gujarat for 2-3 months. And children on their own, not even without their parents. So you can imagine, and half of them were girls, young children, adolescents. So one can imagine what would be happening with such a large number of children, including young girls coming. So that has stopped now. Because of all this movement that we did, that migration has stopped. What has happened is that the child labor continues in agriculture farms. The companies have shifted the fields to their own area. So the cultivation is being done in their own farms now, in tribal areas. That is what the capital has, adapted. In ginning, I would say yes. Child labor, probably we don't see child labor now. In ginning, at least I think in the industrial setting, in India now, child labor is difficult. One would not expect to find children working in industries. But in agriculture farms, yes, it continues. Agriculture farms and at household production level, it continues. There has been, wherever we have worked, there's also been an upward movement on wages. That is there. Because if you organize and demand higher wages, then there is an upward movement on wages. That is there. But otherwise, if we talk about social security, then unfortunately not much. Nothing actually. Because that needs legislation, that needs laws to come in place, and it needs more level of organization. So it basically, see, the progress will happen once the workers organize. And it's very difficult. What happens is that once you organize workers in a place, and because we are talking about migrant workers. So we had very good success in organizing brick kilns. But then the industry, what they do is they replace the workers. They don't bring those workers anymore. They are replaced by other sets of workers. So that is how it moves on. I'll just quickly also add to this. I think one of the first things you already did towards change is by showing up today. And I think I'd like to give a huge round of applause to everyone who showed up. Can we do that quickly? So I'll be honest with you, when we were organizing this and even when we pitched this topic to Emmanuel, I was very nervous. In fact, he knows, I think even before we began, I was very nervous because I said, who's going to come in Ahmedabad to hear about cotton workers? That was my biggest fear, that who cares? If I organize something on something more glamorous, and I'm not saying it's not a relevant issue, but it's just more glamorous, something on sustainability and climate change, people would show up. But if I organize something on labor rights, on workers, on poverty, it's not a topic that in India is relevant anymore because it's been there for so long. Poverty has been with us for ages, so now it's not so much in the focus. So I think just the fact that people came today and we could kind of count on them to at least hear this issue, know a little bit about this, means a lot to us. I think a second thing would be perhaps to also engage a little more. So one option would be to go back to read more about the issue, to maybe talk to people outside here, and to also look at your own
councillors, your own MLAs. Like, I think in the beginning, Sudhir ji spoke how we have elections at every level, right? Now in India, what has happened is that all of us think that Narendra Modi is going to solve all our problems. So we forget that we also have councillors, we have MLAs, we have MPs, we have so many leaders at different levels, but we don't know their names, we don't even engage with them. Ahmedabad, for example, has 48 wards. Now, can somebody tell me how many councillors Ahmedabad has? 192. Sir, you can't tell, you already work in the area. But 192 because every ward has 4 councillors. Now, none of us know this, right? We don't even know that those councillors get money every year to spend on us. We complain about roads, we complain about traffic, we complain about garbage, but we don't engage with our councillors, do we? So I think that action has to come from middle class. And I can't expect a boy like Praveen to take that action because Praveen is working 12 hours a day, 14 hours a day. He doesn't have time to go and talk to the councillor. Your house help doesn't have time to go and talk to the councillor. It's us as middle class, as upper middle class, who have the luxury to sit for 2 hours in an event like this, who can actually engage and in the language that they understand. We have the voice. So I think that's something that we need to do. We had 2 more questions. Yeah. You just take this one. पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबको इधर आने के लिए एंड आपका एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए. थैंक्स अ लॉट फॉर योर स्टार्टिंग पॉइंट. मेरा प्रश्न ये है कि आप और CLRA एंड ये प्रश्न सारे पैनलिस्ट के लिए ओपन है. आप फ्यूचर लीडर्स को कैसे ट्रेन कर रहे हो कि जैसे एजुकेशन में टीच फॉर इंडिया है, अर्मा इज फॉर रूरल मैनेजमेंट, तो क्या ऐसी ट्रेनिंग हो रही है फॉर फ्यूचर लीडर्स टू कम? If I can translate, my question is, how is CLRA training future leaders to do even like a small bit of what Sudhir ji, what Shantilal ji is doing? So, well, I'll take the opportunity to announce that one of the reasons why we wanted to bring them here and we've been engaging with them and why we started. So, you know, Ahmedabad School of Public Policy was Ahmedabad project before. Now we have rebranded as Ahmedabad School of Public Policy. One of the reasons we did that was because we wanted organizations like these to have fellowships. So we are actually going to launch a fellowship with CLRA, and the plan is to take at least 30 fellows every year. And CLRA works in 5 sectors. So you have sugarcane, cotton, and brick. You also have Bhagia Mazdoor, which is basically sharecroppers, people who work on other farms, and their construction labor. So we want to take 5 fellows per sector, and they'll be working for 6 weeks with CLRA, which means they will maybe end up in a police station also like me. They might have all those kind of experiences. We hope not. But the idea was exactly this. That's what I told Sudhir bhai, that, you know, you guys have been doing this work, but how do you translate it to the younger generation to take it further so that they also understand? And we hope he'll say yes to doing the fellowship. Basically, આપણે જે આ પ્રયત્ન જે છે એ આપણે લીડર્સ તૈયાર કરવા માટેનો પ્રયત્ન છે અને આપણે ચોક્કસ પ્રયત્ન કરીએ છીએ કે લોકો સમાજમાંથી જે લોકો સમજે છે એ નીકળીને બહાર આવે અને આ પરિસ્થિતિઓને સમજે. દાખલા તરીકે આપણે જે હમણાં વાત થઈ, રેનુબેને સવાલ કર્યો કે તમને શું મળતા હતા, એટલે એમને કીધું 300 रुपया એટલે બહુ સારું મળે છે. अगर हम लोग जाते हैं इसको देखते हैं कि क्या ये 300 रुपए क्या हैं, तो 300 रुपए 350 रुपए 8 घंटे का मिनिमम वेज होता है. उस समय होता था, जो अभी 380 है. 350 रुपए 8 घंटे का मिनिमम वेज होता था. 12 घंटे इनको 300 रुपए में काम करने हैं. 12 घंटे जब हम कानून के दृष्टिकोण से देखते हैं तब वो डबल हो जाता है. 4 घंटे की ओवर टाइम और एक शिफ्ट, वो डबल हो जाता है. तो जब इनको 700 रुपया मिलना चाहिए था तब इनको 300 रुपए में लाया जा रहा है. ये है जो माइग्रेशन का पूरा, जो मजदूरों के माइग्रेशन का जो पूरा फैक्ट है, वो ये है कि सस्ते मजदूरों को एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस करके और कैसे उसका एक्सप्लॉयटेशन किया जा सके, कैसे उसका शोषण किया जा सके, ये पूरा तरीका है.
और इसलिए आपका जो सवाल है बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम लोग जो समाज में जो लोग इसको समझ सकते हैं उनको बाहर आना पड़ेगा, उनके लिए जो नहीं समझ सकते हैं। सिर्फ कुछ लोग लीडर्स तैयार करेंगे, कुछ लोग आगेवान तैयार करेंगे और कुछ लोग ये लड़ाई लड़ेंगे, ये संभावनाएं रहती हैं, लेकिन निश्चित तौर से पूरे समाज में से जो ऐसे लोग हैं जो उन लोगों के लिए जो नहीं समझ रहे हैं उनको समझाने के लिए, जो नहीं लड़ पा रहे हैं उनके लिए लड़ने के लिए ऐसे लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा और तभी ये लीडरशिप आगे बढ़ेगी, तभी ये मूवमेंट आगे बढ़ पाएगा। Sorry, and on that note, because it's 8:30, I will be closing this here. हमारे पास मैं एक या दो रिक्वेस्ट करूंगी। ये सेशन के बाद हमने चाय रखी है बाहर, तो आप अगर आपके और सवाल हैं, अगर आपको और उनसे इंटरेक्ट करना है, those of you who have more questions, who would like to interact more with our esteemed speakers here, you can do that over tea outside once we wrap up. We also are doing a very small thing, especially since, can I have your name, sir? Rodolph. So, since Rodolph mentioned about action from citizens and this young boy also spoke about it, we have postcards outside of cotton workers. The images that we took from CLRA. We have 100 or so postcards waiting outside. I would make one request. All of you today, as a takeaway from here, you can pick up a postcard and I would want you to write to either the Labour Commissioner or your local MLA about what you heard today, what you felt today, or maybe they could take some action on cotton workers. If you could do just that, and trust me, that's not easy, because once you leave from here, you'll be really motivated. You'll think, wow, I'm going to do this. And the next day, when you sit down with Google to find out who's the Labour Commissioner and what is the address and go on a government website, you would lose the motivation when you even navigate a government website to figure out who's the commissioner you should write to. And by the time you finish writing it, the task of actually going to a post box and mailing it will also seem really big. But such is civic action. It's something that takes a little bit of effort, a little bit of push. So if you can, I would really request, once we leave from here, do take those postcards, write whatever you want, whatever you heard from today and you think can be changed. Imagine a Labour Commissioner getting 100 postcards, right? He would actually start thinking, oh my God, what is happening? At least there will be some thought in that direction. To close the thing, I would want to actually felicitate our speakers here. And because I have some very interesting known faces in our audience, people who have supported us. Kalpesh bhai, can we have the mementos? Are they here?